Bismillahirrahmanirrahim. SLOs of this lesson are: analyze how the poet uses language to appeal to the senses through use of figurative language, including similes, personification, and alliteration. Recognize literary techniques such as personification. Describe the object being personified. Deduce meaning of difficult words from context. In this lesson, we are going to discuss what is a figurative language. As I told you in your previous lesson, that figure of speech are those literary devices which are used in poetry, novels, stories, etc. to attract the people, to appeal the people. It makes the writing more catchy. Attractive बनाती है आपकी राइटिंग को. फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है? डेकोरेट करती है आपकी राइटिंग को, जिसमें हम चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट का एक लिविंग थिंग से कंपैरिजन करते हैं टू मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग. उसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स से, ऑब्जेक्ट से ऐसा काम करवाते हैं जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं. सो why we do this? Why we make them do imaginary things? Because to make the things or writing interesting for the readers. Figurative language is used when a writer describes something using comparisons that go beyond literal meaning. The words mean more than what they say on the surface. क्या है? डीपर मीनिंग होता है. जो भी फिगरेटिव लैंग्वेज के जरिए कहा जाता है या लिखा जाता है, उसका डीपर मीनिंग होता है. फिगरेटिव लैंग्वेज इज नॉट मेंट टू बी इंटरप्रेटेड बाय द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स. आप सिंपली जो है उसका मीनिंग डिक्शनरी में नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज दे हैव द डीपर मीनिंग. उसका बहुत गहरा मीनिंग होता है. जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस होती है, उसका सिंपली डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढकर उसको नहीं लिख सकते. Figurative language is used in poetry and fiction as well as in everyday speech. As I told you, it is used in poetry and fiction. Fiction is like stories which is not based on reality, and the non-fiction is based on reality. There are many figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच में आपका है सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबॉल, पन, एक्सेट्रा. In this lesson, we will discuss the figure of speech personification. We have discussed the concept of personification in your previous lessons too. So, look here. The car danced across the icy road. What is this? What does it mean? पर्सोनिफिकेशन आपका वो फिगर ऑफ स्पीच है जब हम नॉन लिविंग थिंग से, ऑब्जेक्ट से वो काम करवाते हैं टू मेक देम डू दोज थिंग्स विच कैन ओनली लिविंग थिंग्स कैन डू. फॉर एग्जाम्पल, द कार डांस अक्रॉस द आइसी रोड. अ कार कैन नॉट डांस. Only a human can dance. How a car can dance across the icy road? कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है. अब उससे हमने क्या करवाया? डांस. सो दिस इज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन टू मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग. ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है. पर्सोनिफाई क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया है. द एंग्री क्लाउड्स मार्च अक्रॉस द स्काई. एंग्री क्लाउड्स कैन बी एंग्री? नो, दे कांट बी एंग्री बिकॉज दे आर क्लाउड्स. दे हैव no feelings, no expression, they are not human. How can they get angry? So this is the use of personification. This is imagination. This is imaginary. Clouds cannot get angry. The stars in the clear night sky winked at me. Winked? How can a star wink? Star wink नहीं कर सकते. So this is again the use of personification. The tulips nodded their heads in the breeze. Nodded means sar hilana. How can flower nod their heads? They have no head. If you see, flowers के तो heads भी नहीं हैं
और वो सर कैसे हिला सकते हैं? ब्रीज सुबह की ठंडी हवा में अपना सर हिला रहे थे, ट्यूलिप्स के फूल. सो दिस इज personification figure of speech. It is counted as figurative language which we can use in poetry or fiction. Another figure of speech is alliteration. We have discussed it in detail in your previous lesson. The repetition of consonants or sound at the beginning or two or more words in line of poetry. Alliteration क्या है? The repetition of consonant sound. Repetition है consonant sounds की, जैसे कि the trees swayed shyly in the summer breeze. You can hear the sound of S here. See? Sound of S here, the consonant sound of S here. Repetition है, you can see, repetition है S के sound की, जैसे कि big, black, bear. The sound of B here. Big, black, bear. The sound of B, the consonant sound. So, poems में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं इस तरह की figurative language जो कि alliteration है. Seashells on seashore. The sound of C here. S. So, this is the alliteration we use in poems and the fiction. Another figure of speech. And what is a simile? A simile is a comparison between two unlike things that have something in common. Unlike thing मतलब जो कि एक जैसी ना हो. Simile में हम दो चीज़ों का comparison करते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसी ना हो, लेकिन उनमें similarity हो किसी चीज़ की. A simile always uses the word like or as to make a comparison. Simile में हम कौन से word use करते हैं like और as का comparison के लिए, जब हम दो चीज़ों को compare करते हैं. For example, her dress is as bright as the sun. अब जो dress है वो इतना bright है जैसे कि sun. अब dress और sun का comparison है इधर. Means dress इतना bright है जैसे कि सूरज. As light as feather. इतना हल्का जैसे कि पर, feather. He is brave like a lion. So, he, the person, is compared with the lion. अब क्या है? कौन सी चीज कॉमन है कि दोनों क्या है? ब्रेव है. तो लाइक का मैंने यूज करके कंपैरिजन किया है. द अदर वन, द गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज रोज. गर्ल इतनी खूबसूरत है जैसे कि कोई गुलाब, रोज. अब गर्ल और रोज का कंपैरिजन किया बिकॉज दे हैव कॉमन थिंग, द ब्यूटी हेयर. क्या चीज कॉमन है? ब्यूटी. और इधर द पर्सन इज हियर एज ब्रेव एज लायन. तो ये कंपैरिजन है, इसको हम यूज करते हैं सिमिली को एज अ फिगर ऑफ स्पीच टू मेक कंपैरिजन इन एनी पोइट्री और एनी फिक्शन. So now we have discussed the figurative language in detail, three figure of speech, the simile, the personification, alliteration. Now let's do this exercises here. Page number 73 of your textbook. Deduce the meaning of the following words, confirm your meaning from the dictionary. आपने क्या करना है? डिक्शनरी से इन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने हैं और इनके मीनिंग अपनी नोटबुक में लिखने हैं. Section B, point out how alliteration is used in the following tongue twister. Tongue twister है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा जो consonant sound है वो बार बार रिपीट हुआ है. Alliteration कैसे यूज हुआ? I wish to wish, the wish, you wish to wish, but if you wish the wish, the which wish. I won't wish the wish, you wish to wish. It's very easy to identify. The sound of W here, wish, wish, which.
which all the sound are with V, with W here. So this is the use of alliteration here. Number 2 example, can, you, can, a can as a canner, can, a can. Yeah, the sound of K here, which is produced by the letter C. So the repetition of the sound of C here. So the use of alliteration here in this tongue twister. Section C here, how many syllables do the following words have? Also identify the stress pattern of the word. Syllable division और stress pattern हमने डिटेल में डिस्कस किया आपकी प्रीवियस लेसन में और क्लासेस में भी. So it would be very easy for you. आपने क्या करना है? You have to count the vowel in the word. Like in dedication, we have how many vowels? E, I, A, I, O, N. रूल है इसका बहुत इजी. आपने क्या करना है? वोवल के हिसाब से आपने सिलेबल को डिवाइड करना है. हर वोवल के साथ आपके 2 कॉन्सोनेंट या एक कॉन्सोनेंट आएगा, और हो सकता है कि कॉन्सोनेंट भी जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो अलग भी आ जाए, और इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड्स. अगर 2 वोवल आपके साथ हैं तो आपका एक सिलेबल बनेगा, जैसे कि इधर है I, O, N. अब डेडिकेशन का कितने सिलेबल्स बनेंगे? 1 सिलेबल ये हो गया, सिलेबल 2 ये हो गया, और ये आपका हो गया 3rd सिलेबल, और ये आपका 4th सिलेबल. 4th सिलेबल लॉन्ग क्यों है? बिकॉज वी हैव 2 वोवल्स इन दिस. So dedication has 4 syllables here. इसी तरह आपने बाकी के वर्ड भी डिवाइड करने. और स्ट्रेस पैटर्न क्या? स्ट्रेस पैटर्न ये है, you have to pronounce the word. You have to feel. If your tongue have a stress on any letter, so dedication, dedication, डी पे क्या पड़ रहा है? आपकी टंग पे शोर पड़ रहा है. You have to pronounce it. Dedication. अब डेरी में जो है आपका क्या पड़ा है? स्ट्रेस है. तो दिस इज द DEDI इज स्ट्रेस्ड. January, it has no stress. Traffic, yes, it has a stress. Traffic, the sound of T has a stress. So ट्रैफिक में भी आपका स्ट्रेस है. ये बाकी के वर्ड्स भी आप प्रोनाउंस करें और इसके स्ट्रेस पैटर्न को अंडरलाइन करें. और सिलेबल डिवीजन भी करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया. सेक्शन डी, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच मीन द सेम एज. इसके सिंपली आपने सिनोनिम्स ढूंढने हैं अपनी पोएम से, द ब्यूटीफुल फ्लावर से, जो हमने पढ़ा है आपके प्रीवियस लेसन में. आपने उसको अगेन रीड करना है और इसके सिनोनिम्स जो हैं ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो जिनके मीनिंग बिल्कुल सेम हो इन वर्ड्स के. लोनली, प्रिटेंडेड, डिसअपॉइंटेड, गोइंग बैक. सेक्शन ई, देयर आर मेनी पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम. द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इंक्लूडिंग इलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन. इलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन को विद एग्जाम्पल्स हमने डिटेल में डिस्कस किया है. तो आपने ये पोर्शन जो है ये करना, ये आपका होम टास्क है. नंबर 1, इलिट्रेशन इज प्रेजेंट इन द सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में इलिट्रेशन है. कौन सा साउंड बार बार रिपीट हुआ? यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन इट. नंबर 2, इलिट्रेशन इज प्रेजेंट इन द थर्ड स्टैंजा. अब ये जो लाइन लिखी हुई है इलिट्रेशन, आपने इसमें बताना कि कौन सा जो वर्ड है बार बार जो है जिसका साउंड रिपीट हुआ है. एंड द थर्ड वन, पर्सोनिफिकेशन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्टैंजा. पर्सोनिफिकेशन को अभी आइडेंटिफाई. इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का यूज किधर है? विच ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड? Section F, use dictionary to find appropriate word definition, identify pronunciation with the help of pronunciation key, identify syllable division and stress pattern. Again, you have to divide them in syllables, these words, and find
द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी और उसको प्रोनाउंस भी करना है। प्रोनाउंसिएशन की के थ्रू हम वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई taught you this in your previous lesson. So it should be very easy for you to do this. Section G, add a word to each sentence to create an alliterative phrase. Alliterative phrase बनाना, आपने इन blanks में वो words add करने हैं जो कि A से start हो। पहले वाले में आपने ऐसा word add करना है जिसका sound A से start हो। The second one is you have to put here in this blank the word which start with what? Yes, with S. थर्ड वाले में आपने यहाँ पर blank में ऐसा word लगाना है जो P से start हो, because P जो है repeat हुआ है, the sound of P is repeated. And the fourth one is Fatma saw clever, cunning and, आपने यहाँ पर ऐसा word लगाना है जो कि C से start हो, जिसका साउंड क से स्टार्ट हो। बट ये भी देखना है कि जो भी वर्ड आप लगा रहे हैं वो ग्रामेटिकली और बाकी के सेंटेंस के साथ एप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसको सूट कर रहा है कि नहीं, उससे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है कि नहीं। यू जस्ट हैव टू केयर अबाउट इट।